Very good evening to all of you, बच्चों. We are live. We are back on ExamDost. We are back with the course on electrical machines. और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं भाई नया टॉपिक दैट इज ट्रांसफॉर्मर लॉसेस एंड एफिशिएंसी. ओके, so we will start a new topic, one that you have been asking for a long time. बहुत समय से आप लॉजिक पूछ रहे हो, बहुत समय से आप डेरिवेशंस पूछ रहे हो. So we are going to understand the losses in a transformer in detail in this particular session. So इस सेशन में my only focus is going to be the losses, not the efficiency. The only thing that we are going to talk about is the losses inside a transformer. Okay. But before we start, बच्चों, let us review what we covered in the morning. Morning lecture का review कर लेते हैं. So in the morning, I told you about testing of a transformer. The first test was open circuit test or the no load test. It measures the core loss. ये core loss measure करता है hysteresis plus eddy current and also measures the shunt branch parameter RCXM. So it is conducted on LV side. Why? Because applying rated voltage on LV side is easy as well as the rating of instrument decreases. It is conducted at rated voltage and frequency. It measures current, power and voltage. The power is VI cos phi, which is the core loss. Short circuit test measures the full load copper loss and the series branch parameter R01 and X01. Conducted on HV side because the rated current of HV side is smaller. HV side का current छोटा होता है, इसीलिए HV पे करते हैं. This is conducted at rated current, but voltage is only 5 to 10% of rated. ये भी मैंने explain किया था. Why is it like that? Why the voltage is very small as compared to the rated voltage, and it will measure the current, the power and the voltage. ठीक है? It will also measure three things: the current, power and the voltage. Now the impedance will be V by I, the resistance power upon I square, and then reactance under root Z square minus R square. Okay. Polarity test to judge the terminals having same polarity on primary or secondary. Why? For parallel operation. If we know the terminals having the same polarity on primary and secondary, we can connect them in a proper manner. We can connect them properly for parallel operation. Otherwise beta, there are circulating current. वरना क्या आएगा? There will be circulating current which can damage the transformer. Okay, damage the transformer. Now, we connect the primary in series and apply a low voltage. Measure the secondary voltage. If voltage is E1 plus E2, additive. E1 minus E2, then it is subtractive. Sumpner's test or the back-to-back test, it measures the total losses, core plus copper, but it requires two identical transformer. Core और copper ये measure करता है एक साथ, लेकिन two identical transformer चाहिए. And the purpose of this test is to estimate the temperature rise in a transformer. Transformer का temperature rise अपने को estimate करना है. The primary windings are connected in parallel to the rated voltage. Primary पे rated voltage लगता है parallel में. And secondaries are connected in series opposition. And by applying a small voltage across secondary पे छोटा voltage लगा के, we make sure that rated current flows in the secondary. Secondary पे rated current flow कराया जाता है. So without applying the rated load, we operate the transformer at rated voltage and rated current. बिना rated load लगाए ट्रांसफॉर्मर को rated voltage, rated current पे चलाया जाता है. This is called as the phantom loading, and it has simultaneous core and the copper loss. Okay. So these formulas I will teach you today. Okay. Is that clear? And efficiency also we will learn today. So I'm deleting this. We will cover efficiency tomorrow and we will cover the losses today. Atul bhai, I don't think this question is relevant right now. What is the difference between the relay and circuit breaker? Both these things will be covered in power system. Now,
High core loss in the open circuit test, we need to check for harmonics or wrong frequency. Low impedance in the short circuit test, we need to check for winding shorting or design flaw. Wrong polarity in parallel operation, we need to conduct the polarity test. अगर आपने पैरेलल ऑपरेशन में गलत पोलैरिटी लगाया तो पोलैरिटी टेस्ट कीजिए. ओके, तो ओपन सर्किट टेस्ट measures the P core XM and RC. It is conducted on LV side. Short circuit PCU Z01 R01 X01 conducted on HV at rated current less voltage. Polarity test additive subtractive can be conducted on any side. Total losses, Sumpner's test estimate the total losses and the temperature rise. Total losses and the temperature rise, and it has phantom loading. Okay, is that clear? So what is the advantage of the Sumpner's test, beta? Advantage of the Sumpner's test that without connecting the rated load, we can operate the transformer under rated condition and estimate the temperature rise. बिना रेटेड लोड लगाए आप ट्रांसफॉर्मर को रेटेड कंडीशन पे चला के टेम्परेचर राइज एस्टिमेट कर सकते हो. नीतू जी कह रही हैं आज मॉर्निंग के क्वेश्चन में सर आपने रेफर क्यों किया सर्किट को. देखो मॉर्निंग के क्वेश्चन में क्या था नीतू जी, प्राइमरी पे 400 वोल्ट था. ओके, प्राइमरी वोल्टेज वाज 400, सेकेंडरी वाज शॉर्टेड. like this. Now Neetu ji, it is asking the primary current. Okay, तो अब आप ये तो नहीं कह सकते सर 400 बाय R1 प्लस JX1 कर दो. Why? Because there will be EMF. So you can't say 400 by Z1. Okay, you can't say 400 by Z1. So what we did is we brought the entire circuit to the primary side. Even the load impedance is 0. Like this. Now can I say beta that voltage current is 400 by Z? क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि current अब 400 by Z हो जाएगा? Yes. But how will you solve this circuit without referring? बिना रेफर किए कैसे सॉल्व करोगे? चलो विनीत भाई बहुत बढ़िया, अगर एआई का पेपर अच्छा गया है आज. समझ में आया भाई क्यों रेफर किए थे? आई नीडेड द प्राइमरी करंट. हाउ विल आई फाइंड द करंट फ्रॉम दिस सर्किट? आई हैव टू रेफर द सेकेंडरी टू द प्राइमरी. देन ओनली आई कैन सॉल्व एंड फाइंड द करंट. तभी मैं सॉल्व करके करंट निकाल सकता हूं, वरना आई विल नॉट बी एबल टू फाइंड इट. ओके, इज दैट क्लियर? बोलो. चलो क्लियर भाई. Any doubts with whatever we covered in the morning? Anybody having any doubts with what we covered in the morning? किसी का कोई भी डाउट है जो मॉर्निंग में कवर किया था उसके अंदर? In testing of the transformer, any confusion, any queries that you may have? बताइए. और देखो अगर सर्किट के प्रॉब्लम्स में फंसते हो ना तो पहले एक्चुअल सर्किट बनाया करो, बाद में रेफर करने का डिसीजन लो. First, you always draw the actual circuit and then you decide where to refer, how to refer, or even if you need to refer. But first, draw the exact circuit. First, draw the circuit of primary on primary, secondary on secondary. Do not refer. After that, you refer. तो बेटा E1 मुझे पता थोड़ी है, 400 minus E1 by Z1 कर लेता. What is E1? I don't know E1. Achint bhai, if you wanted to solve using this, you will say E2 is I2 Z2. Now E1 will be N1 by N2 E2, N1 by N2 I2 Z2, but I need I1. I2 is
So E1 will be, now you will say I1 is 400 minus I1 Z2 N1 by N2 square. Collect the terms of I1 on one side. तुमको नहीं लगता यही बात पड़ गई कि रेफर करना था Z2 को? Don't you think it is same as referring Z2 to the primary? बताओ, बात तो बराबर ही पड़ गई. In a short circuit test, beta, circuit is like this. So power factor is R by Z. Power factor is R by Z. But if you want to calculate power factor from the test data, real power is VI cos phi. So cos phi is power upon VI. So cos phi is always wattmeter reading divided by voltmeter reading into ammeter reading. ठीक है नीतू जी, ये बात क्लियर हो गई? अगर आप सोचते इस सर्किट को सॉल्व करने का तब भी उसी रिजल्ट पे पहुंचते और बहुत ज्यादा मेहनत करके पहुंचते. दैट इज वाई बेटा, दैट इज वाई दिस सर्किट इज इंपॉर्टेंट. दैट इज वाई दिस कॉन्सेप्ट ऑफ रेफरल इज इंपॉर्टेंट. ओके, दिस कॉन्सेप्ट ऑफ रेफरल इज इंपॉर्टेंट. सेकेंडरी करंट रेटेड नहीं दिया तो पीसीयूएफएल फाइंड करने का तरीका बताया, बट इन ओपन सर्किट वोल्टेज रेटेड नहीं दिया तो ओपन सर्किट टेस्ट में वोल्टेज विल ऑलवेज बी रेटेड, अदरवाइज द कोर लॉस यू कैन नॉट डिटरमाइन अंडर रेटेड कंडीशन. कॉपर लॉस जितना इजीली स्केल हो जाता है, कोर लॉस इतना इजीली स्केल नहीं होता है. ओके, यू कांट स्केल कोर लॉस दैट इजीली दैट यू कैन स्केल द कॉपर लॉस. कॉपर लॉस जितना इजीली स्केल हो जाता है, कोर लॉस उतना इजीली स्केल नहीं होता है. इसलिए ओपन सर्किट टेस्ट में ऐसा सवाल नहीं बनेगा वेयर कोर लॉस इज नॉट गिवन एट रेटेड वोल्टेज. सर्कुलेटिंग करंट वाला थोड़ा समझा दीजिए. देखो सर्कुलेटिंग करंट वैसे हम आगे पढ़ेंगे अंडर पैरेलल ऑपरेशन. राइट नाउ यू डोंट नीड टू स्टडी सर्कुलेटिंग करंट, बट स्टिल लेट मी चलिए शो यू. चलिए लेट मी शो यू. Suppose beta I am connecting two transformers in parallel. So these are their primaries. Okay. But on the secondary side, under parallel connection, and I am referring the entire impedance to the secondary. See. Suppose they are identical in all aspects, but in the secondary, mistakenly beta, I am connecting the wrong polarity terminals together. So if this is V1, suppose V1 by A, but here I am connecting positive to negative and negative to positive. पॉजिटिव से नेगेटिव जोड़ दिया, नेगेटिव से पॉजिटिव जोड़ दिया. नाउ इफ यू सी द सर्किट ऑन द सेकेंडरी, if you see the circuit on the secondary, so one voltage is like this, the other will have opposite polarity. Now beta, under parallel connection, if the polarities are not same, parallel connection में अगर polarity same नहीं होंगी, there will be a current between the two sources. दोनों sources के बीच में current आएगा. This current is circulating current, which is V1 by A minus V1 by A divided by total impedance Z02. So this is your circulating current. ठीक है,
This is your circulating current. So in order to avoid the circulating current, both voltages must be same and they must have the same polarity. दोनों वोल्टेज बराबर भी होनी चाहिए और सेम पोलैरिटी भी होना चाहिए. अंडरस्टूड बेटा? Wrong polarity connection on secondary. नहीं बेटा, it is not like Sumpner's test. In Sumpner, secondaries are connected in parallel series. ठीक है? Secondaries are connected in series, but here primary as well as secondary is in parallel. Primary और secondary दोनों parallel में है. सर अगर एससी टेस्ट में एचवी साइड में रेटेड वोल्टेज लें और सिर्फ वाइंडिंग ही डैमेज होगा तो हाई करंट की वजह से या कुछ और भी इफेक्ट होगा? मेन तो बेटा वही है, वाइंडिंग डैमेज होगा. अब वाइंडिंग ही डैमेज हो गया तो और कुछ होने का क्या स्कोप बच गया? इफ योर वाइंडिंग गेट्स डैमेज ड्यू टू रेटेड वोल्टेज अंडर शॉर्ट सर्किट टेस्ट, व्हाट विल यू डू? बेसिकली योर ट्रांसफॉर्मर इज गॉन ना, तो नथिंग एल्स मैटर्स, नथिंग एल्स मैटर्स. ओके, इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? चलिए, shall we move ahead now? चलिए, so now beta in a transformer there are four kind of losses: iron loss or core loss, copper loss or you can say ohmic loss, stray loss and dielectric loss. But our focus is only on these two losses. हमें focus सिर्फ इन दो losses पे करना है because the other two losses are very very small and they are ignored. बाकी के दो लॉस की वैल्यू बहुत छोटी होती है, इसीलिए दे आर इग्नोर्ड. नाउ आयरन लॉस और कोर लॉस, बेसिकली द लॉस रिस्पॉन्सिबल फॉर हीटिंग ऑफ द ट्रांसफॉर्मर कोर. जिस लॉस की वजह से ट्रांसफॉर्मर का कोर गर्म होता है, दैट इज कॉल्ड एज द आयरन लॉस बिकॉज द कोर इज मेड ऑफ आयरन एंड सिंस द वाइंडिंग इज मेड ऑफ कॉपर, ohmic loss is called copper loss. That is why beta this term of copper loss is only appearing in the machine because the winding is made of copper. ये कॉपर लॉस वाला जो टर्म है, कॉपर लॉस वाला, ये सिर्फ मशीन्स में आता है और किसी सब्जेक्ट में नहीं, क्योंकि यहाँ वाइंडिंग कॉपर से बनती है. ठीक है, तो वॉट एवर इज द लॉस इन द वाइंडिंग, द आई स्क्वायर आर लॉस, दैट इज द ओमिक लॉस, will be termed as the copper loss. But the core is made of iron, so losses in the core will be called as iron loss. Now beta, in case of power system, if you go, in case of power system, the transmission line is made of aluminium. So the I square R loss in the transmission line, I square R loss in the transmission line is basically called as ohmic loss, not copper loss. ठीक है, ohmic loss ना कि copper loss कहते हैं when your I square R loss happens in a transmission line. जब ट्रांसमिशन लाइन में I square R loss होता है तो it is said to be ohmic loss, not the copper loss, because it is not made of copper. वो कॉपर से नहीं बनी होती है. Is that clear? So remember this, copper loss and iron loss are the terms used in machines. Now iron loss has two parts, hysteresis and the eddy current loss. These are the stars of the day on which we are going to focus. ये आज के दिन के stars हैं बेटा, इसी पे फोकस किया जाएगा. Upon increasing the flux, बेटा I mu always has a higher value than IW. I mu का वैल्यू IW से हमेशा अधिक होता है and that is why it will always dominate over IW. इसीलिए वो हमेशा dominate करता है IW को. ठीक है, चलिए, तो first is the copper loss बेटा. Copper loss is the ohmic loss in the winding when the winding carries a current. So if you see, this is a three-phase transformer. So there are three primary and three secondary. Now these windings are made of copper. When they carry a current, there will be a loss I square R. यहाँ तीन वाइंडिंग है थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर की, तीनों कॉपर से बनी है. तो when they carry a current, जब इनमें करंट बहेगा तो एक लॉस आएगा I square R. For three phase, it will be 3I square R. Now beta, when I taught you practical transformer, in that we studied the transformer with winding resistance. जब practical transformer में transformer with winding resistance cover किया था, that time I discussed in detail about the copper loss. So copper loss is the copper loss in primary plus copper loss in secondary. Primary और secondary का copper loss add कर दिया. Also, you can refer the entire resistance to one side and find the copper loss.
पूरे रेजिस्टेंस को एक तरफ ले लीजिए, प्राइमरी या सेकेंडरी, और कॉपर लॉस निकाल लीजिए। एट फुल लोड करंट I1 इज I1 रेटेड, I2 इज I2 रेटेड। तो फुल लोड कॉपर लॉस इज I1 रेटेड स्क्वायर इंटू R01 ऑल्सो इक्वल टू I2 रेटेड स्क्वायर R02, है ना। मैंने आपको बताया था ना, फुल लोड का मतलब होता है रेटेड कंडीशन। तो वेन एवर योर ट्रांसफॉर्मर कैरीज द रेटेड करंट, इट इज सेड टू बी द फुल लोड कंडीशन एंड द लॉस विल बी कॉल्ड एज फुल लोड कॉपर लॉस। जब वाइंडिंग में रेटेड करंट बहेगा, एंड अवधुत भाई रेटेड करंट इज S rated upon V rated. I rated is calculated as S rated upon V rated. So when the winding carries rated current, the loss is said to be full load copper loss. Loss क्या कहलाएगा? Full load copper loss. Now what is R01? R01 is the equivalent resistance on the primary, R1 plus R2 into N1 by N2 whole square. R02 equivalent resistance on secondary, R2 plus R1 N2 by N1 whole square. Okay. Now in per unit beta, in per unit the rated current is written as 1 pu. Per unit में rated current आपका 1 pu होता है. So if you put here the rated current as 1 pu, the copper loss will be equal to resistance. ये मैंने पहले भी बताया था, पर यूनिट में रेटेड करंट 1 pu होता है, तो अगर 1 pu डालोगे तो लॉस आपका रेजिस्टेंस के बराबर आ जाएगा। ठीक है, लॉस आपका रेजिस्टेंस के बराबर आएगा। तो PCUFL in per unit is R01 per unit and also equal to R02 per unit. But will the transformer always operate at full load? हाँ भाई, ऐड रेफर करके ऐड किया। कुमुद भाई ऐसा मत करो, ये सारी चीजें ट्रांसफॉर्मर विद वाइंडिंग रेजिस्टेंस में पढ़ा चुका हूं कि हाउ टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑन प्राइमरी, how to calculate equivalent resistance on secondary, equal reactance on primary, equivalent reactance on the secondary, transformer in per unit, ये सारे टॉपिक कवर हो चुके हैं बेटा। तो थोड़ा सा तो रिवीजन भी करिए, ऐसे कैसे चलेगा बताओ। अगर आपको इसमें डाउट आ गया कि सर ये फॉर्मूला कैसे लिखा है, तो बताओ क्या किया जाए, फिर कैसे तुमको मशीन सिखाया जाए। नाउ this I have already explained that rated current is 1 per unit. So full load copper loss will be equal to equivalent resistance in PU, and equivalent resistance in PU is same on both the side. ठीक है, equivalent resistance in PU is same on both sides. Now beta, if transformer is not operating at full load, देखो what is full load? Full load is the rated condition. Full load क्या है? Rated condition होती है। So suppose I have designed a transformer of rating 5 MVA. So will the load always be 5 MVA? अगर मैंने 5 MVA का बना दिया तो क्या लोड हमेशा ही 5 MVA रहेगा? No, it is not necessary बेटा. It is not necessary. Okay. So that is why beta the load is written as X into S rated. So what is fractional loading? Fractional loading means what fraction of full load are you connecting? Full load से कितना लोड आप कंपैरिजन में कनेक्ट कर रहे हो? बेसिकली इट इज S per unit. बेसिकली इट इज S per unit. ये क्या होता है? S PU के बराबर होता है। ओके, so it is S load by S rated. So that means as compared to the rated power, how much power is the load? How much power is the load drawing from the transformer? Rated के मुकाबले कितना पावर लोड ट्रांसफॉर्मर से ले रहा है? That is the fractional loading. S load by S rated. Now if you assume beta voltage is rated, if voltage is V rated, okay, then if S load is X into S rated, or you can say voltage is 1 pu and S load is X pu, which is V pu into I pu,
That means IPU will be X. So generally we assume that the transformer delivers the load at rated voltage. ऐसा मानते हैं कि ट्रांसफॉर्मर लोड को रेटेड वोल्टेज दे रहा है. तो whatever is the per unit power is the per unit current. So per unit current is I upon I rated, that will be equal to X. Per unit current क्या होगा? I upon I rated, which is equal to X. Now copper loss is proportional to I square. So copper loss by PCUFL is I by I rated square because PCUFL happens at I rated. So I by I rated is X, so X square. So PCU is X square into PCUFL. X square into PCUFL. ठीक है. So basically, if the current is X times the rated current, the copper loss is X square times the rated copper loss or the full load copper loss. अगर करंट X टाइम्स हो रहा है तो कॉपर लॉस X स्क्वायर टाइम्स आपका हो जाएगा, बिकॉज कॉपर लॉस इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट. कॉपर लॉस करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आता है. तो नाउ व्हाट इज फ्रैक्शनल लोडिंग बेटा? फ्रैक्शनल लोडिंग का मतलब है, सपोज जैसे आपने ट्रांसफॉर्मर 100 केवीए का बनाया, बट उस पे लोड आपने लगाया 80 केवीए, तो फ्रैक्शनल लोडिंग इज 80 बाय 100, 0.8. यानी कि कितने पावर का लोड कनेक्टेड है डिवाइडेड बाय ट्रांसफॉर्मर की कैपेसिटी कितनी है. व्हाट इज द पावर ऑफ द लोड डिवाइडेड बाय द कैपेसिटी ऑफ द ट्रांसफॉर्मर इज कॉल्ड एज द फ्रैक्शनल लोडिंग. तो फ्रैक्शनल लोडिंग इज S per unit, that is apparent power of the load in per unit. Okay, same is the value of I per unit assuming that voltage is 1 pu. वोल्टेज को 1 pu मान लिया जाए तो जो पावर की वैल्यू पर यूनिट में है वही करंट की वैल्यू पर यूनिट में है. दैट मींस इफ द लोड पावर इज X टाइम्स द रेटेड पावर, द लोड करंट इज आल्सो X times the rated current. The load current is also X times the rated current. Sir, if load is not operating at full load, apparent power on both sides will not be same. Aliza beta, first of all, in a practical transformer, apparent power is never same on both sides. Practical transformer में apparent power दोनों तरफ same नहीं होती. क्यों? Real power is not same because of resistances. In the circuit, there are resistances, so there will be loss. That is core loss and copper loss, which means input and output power cannot be equal. Reactive power is not same due to reactances in the circuit. The reactances like XM, the leakage reactance, they will consume reactive power. So input and output reactive power is never the same. Practical transformer में ना तो input output real power same हो सकती क्योंकि बीच में लॉस आएंगे, और ना ही इनपुट आउटपुट रिएक्टिव पावर सेम हो सकती क्योंकि बीच में लीकेज और मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस रिएक्टिव पावर खा जाते हैं. तो एपरेंट पावर तो वैसे भी दोनों तरफ सेम नहीं होती. एपरेंट पावर इज सेम ऑन बोथ साइड्स इन अ आइडियल ट्रांसफॉर्मर बिकॉज देयर आर नाइदर एनी लॉसेस नॉर लीकेज नॉर मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस. तो आइडियल ट्रांसफॉर्मर में ना तो कोई लॉस होता ना कोई रिएक्टेंस आता, तो ना तो ट्रांसफॉर्मर रियल पावर खाएगा और ना ही वो रिएक्टिव पावर खाएगा. तो जब वो ना रियल पावर खा रहा ना रिएक्टिव पावर खा रहा, तो जितनी पावर आप उसे दोगे उतनी ही वो आगे बढ़ा देगा, बीच में वो कट नहीं ले रहा है. इट इज नॉट टेकिंग अ कट इन बिटवीन. बेटा S load by S rated is X. Okay, whenever you divide any value by the rated or the base value, that is per unit. जब भी किसी वैल्यू को बेस या रेटेड से डिवाइड करो तो PU में आता है ना, तो दैट इज X. अगर मैं बोलूं ट्रांसफॉर्मर का रेटिंग 100 केवीए है, लोड आपने 80 केवीए का लगाया, अब इस 80 केवीए को पीयू में लेके आओ गोलू भाई. कैसे लाओगे? पीयू में लाने के लिए वैल्यू को बेस से डिवाइड करोगे. व्हाट इज द बेस वैल्यू? रेटेड वैल्यू. तो 80 को 100 से डिवाइड किया 0.8, दैट इज द पर यूनिट वैल्यू एंड दैट इज कॉल्ड एज द फ्रैक्शनल लोडिंग X. ओके, तो बेसिकली व्हाट इज फ्रैक्शनल लोडिंग? What fraction of the rated load is connected to the transformer
which means S load by S rated. S load by S rated is S per unit, SP. ठीक है अलीजा जी, आपका डाउट क्लियर हुआ? तो ट्रांसफॉर्मर फुल लोड पे ऑपरेट करे या नहीं करे, इनपुट आउटपुट पावर कभी बराबर नहीं होती है बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंसेस एंड द रिएक्टेंसेस. रिएक्टेंसेस विल मेक रिएक्टिव पावर अनइक्वल, रेजिस्टेंसेस विल मेक रियल पावर अनइक्वल. सो दे आर नेवर द सेम, कभी भी बराबर नहीं आएंगी. ओके, इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? और बताइए, और कोई डाउट है? So this is clear. The copper loss is x square into PCU/FL. Now, first question: copper losses vary as the square of load. Copper losses load के किस पैरामीटर के स्क्वायर के साथ वेरी करता है? What parameter of load is squared for finding the copper loss? Current. PCU is I square R. So it varies with the square of the load current. Now the full load copper loss is 1600 watt. At half load, the copper loss will be, if the full load copper loss 1600 watt है, तो half load पे कितना होगा? प्रियंका जी हैंड रेज करिए. आपका जो डाउट है मैं ऑडियो पे बता देता हूं. रेज योर हैंड, आई विल आंसर योर क्वेरी ऑन द ऑडियो. $400. So half load means beta that the load power is half of the rated. So X will be equal to half. Now PCU is X square PCU/FL. $400 watt. बोलिए प्रियंका जी, बोलो बेटा. आई एम नॉट एबल टू हियर यू. प्रियंका जी का डाउट है इस स्टेप में. अब देखिए, जब मैंने आपको पर यूनिट सिस्टम पढ़ाया था, आई टोल्ड यू इन अ पर यूनिट सिस्टम SPU is VPU into IPU. Now SPU is X. I am assuming voltage is rated, which means voltage is 1 per unit. Rated values are always 1 pu. S per unit is X. VPU is 1, which means IPU will be X. If IPU is X, IPU is what? What is per unit value? Actual value by rated और actual value by base. Actual value को rated या base से divide करो तो per unit आता है. And that is why I upon I rated is X. I upon I rated X आ गया. Okay, चलिए. Next is the core loss beta, or you can say iron loss. So the losses that occur inside the core of the transformer, and the core is made of iron, are said to be the core loss or the iron loss. इन्हें क्या कहेंगे? core loss और iron loss कहते हैं. So they are divided into two category: hysteresis loss और eddy current loss. Hysteresis loss और eddy current loss में divided हैं. And these losses are responsible for heating the transformer core. For heating the transformer core. Is that clear? तो ट्रांसफॉर्मर कोर जो गर्म होता है, that is only due to the core loss, or you can say iron loss. Now the first loss is the hysteresis loss. Okay, पहला loss कौन सा होता है बेटा? Hysteresis loss. Now first let me explain you the hysteresis loss. Listen to me carefully. ध्यान से समझिएगा. hysteresis loss समझाता हूं बहुत अच्छे से. Okay. तो मुका बेटा, अब ऐसा है कि स्क्रीन में से निकल के ना घुसंड मारा जाएगा.
अभी कोर लॉस पढ़ रहे हैं ना, तो समझ में आ जाएगा विद टाइम की कोर लॉस को इतनी आसानी से स्केल क्यों नहीं कर सकते। तनिक सब्र भी करना चाहिए थोड़ा सा। चलिए, लेट अस सी बेटा। So I will explain you the hysteresis loss. See carefully बेटा। चलिए, so first things first बेटा, whenever you have a magnetic core, whenever you have a magnetic core and you have a coil on it, आपका क्या है, उसके पास एक coil है, there is a coil wound over the magnetic core. The voltage in this coil is L di by dt. Voltage क्या है? Voltage is L di by dt. So voltage will define the rate of change of current. Just a minute. What I can say. यहां पे भी ना हम लोग सेम फिगर बना लेते हैं in order to understand better. Now see. This is the voltage. Voltage is L di by dt. Now if voltage is positive, voltage negative, current reduces. How will you show the negative voltage? I will show negative voltage like this. I will show negative voltage like this. And also you can understand voltage is d psi by dt. So when pi or psi becomes constant, voltage becomes zero. जब psi या phi constant हो जाएंगे तो voltage will become zero. Okay. Now beta, let us understand the working. So right now at the two terminals of the coil I have equal voltage. Coil के दोनों terminals पे, just a moment. Okay. So now beta, I have equal voltage on the two sides. That means the potential difference is zero. दोनों तरफ बराबर वोल्टेज है तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, जिसका मतलब करंट इज टेकन एज कांस्टेंट. करंट मेरा क्या रहेगा? करंट मेरा कांस्टेंट रहने वाला है. ओके. नाउ लेट्स
see this, what happens? So if you see beta, in this magnetic material, this red and white objects are the dipoles. ये red और white object क्या है? These are the dipoles which are north and south. Two different color because one is north, other is south. एक north है, एक south है. These are the magnetic dipoles and they are all randomly oriented. ये सारे के सारे क्या हैं? ये randomly oriented हैं. All these are magnetic dipole. Now, beta, when you will apply a voltage, okay, I am applying a positive voltage, so current will gradually increase. Current will gradually increase. Why I am saying this? Because what is the voltage? Voltage is proportional to di by dt. So based on the value of voltage, di by dt is decided, which is the rate of change of current. वोल्टेज के अनुसार di by dt डिसाइड होता है, जिससे मालूम चलता है कि करंट कितने रेट से बढ़ेगा या घटेगा. ओके, so when we have applied a voltage, the current starts to increase. Okay, when we have applied the voltage, the current increases, magnetic field established, and dipoles start to orient south north. They will start to orient in the direction of magnetic field. So if you see, when you are increasing the current, the flux is increasing. जब आप करंट बढ़ा रहे हैं, so my flux is increasing. Is that clear? मेरा flux increase होने लग रहा है when I am increasing the current. So this is the virginal curve. ये क्या है? This is the virginal curve because initially beta, initially all the dipoles were random. Initially all the dipoles were random. सारे डाइपोल रैंडम थे because it was a fresh material. When I have applied a voltage, the current begins to flow and a magnetic field is created. So my dipoles orient in the direction of the magnetic field. इससे मेरे डाइपोल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ओरिएंट होते हैं. As the current increases, the value of the magnetic field increases. जैसे जैसे करंट बढ़ता है, मैग्नेटिक फील्ड आपका बढ़ता है. More and more dipoles get aligned with the magnetic field. ज्यादा से ज्यादा डाइपोल मैग्नेटिक फील्ड से अलाइन होना स्टार्ट हो जाते हैं. And once all the dipoles are aligned, once 100% dipoles are aligned, then your graph will saturate. So this graph will saturate when all dipoles are aligned. Okay. So when all dipoles are aligned, the graph will saturate. समझ गए? The graph is going to saturate when all dipoles are aligned. Understood? Understood, beta? Because you cannot increase the flux density any further. अब इससे ज्यादा क्या ही कर लोगे? 100% alignment से ज्यादा तो उस पे आ जाता है saturation. And at that point, when that saturates, when you reach saturation, beta, when you reach saturation, the psi becomes constant and voltage becomes zero. Saturation पे psi या constant आ जाएगा तो voltage will become zero. So at that saturation point, voltage at the two ends will be equal. Okay. So if you see at saturation beta, at saturation, both the voltages are equal. The graph has saturated. The x-axis is proportional to the current and y-axis is the flux. Y-axis पे flux है, x-axis पे mmf है. mmf is proportional to the current. So the even if you increase the current any further, the flux will become constant and net voltage will be zero. इतना समझ में आया? यहां तक कोई क्वेरी है तो बताइए. Even if you increase the current beta, the voltage will stay zero because the flux has saturated. You cannot increase the flux or the flux density any further. आप flux या flux density को और नहीं बढ़ा सकते. So it becomes constant. It becomes constant. Clear हुआ कि नहीं हुआ बताइए? Is this clear or not? बोलो मेरे भाई, is this clear to everyone or not? Clear हो गया?
Now beta, now what I will do, I will apply negative voltage. So when I apply negative voltage बच्चों, the current will begin to decrease. जब मैं नेगेटिव वोल्टेज लगाऊंगा तो करंट डिक्रीज होने लगेगा. करंट विल बिगिन टू डिक्रीज. So when you decrease the current, current is on the x-axis. When you decrease the current, you will move to the left. Current आपका x-axis पे है. जब आप नेगेटिव वोल्टेज लगाओगे करंट घटेगा. करंट घटने का मतलब है आप उल्टी डायरेक्शन में यानी कि लेफ्ट साइड पे चलोगे. करंट क्योंकि x-axis पे है ना, तो करंट बढ़ना माने राइट जाना, करंट घटना माने लेफ्ट जाना. So I will move to the left. Okay. Now let's start this. So beta, when you reverse the voltage, the current reduces and you move to the left, and you will move to the left. So dipoles orientation will start to become random. Dipole धीरे धीरे random होने लगेंगे आपके, उनका alignment बिगड़ने लगेगा. So flux will begin to decrease. The flux will begin to decrease. Okay. And when you make the current zero, when you make the current zero beta, when electrons are no longer flowing in the circuit, even at that point some dipoles are still aligned. आपने माना कि करंट जीरो कर दिया, the electrons have stopped flowing, but still if you see the dipoles remain aligned. This is retentivity. This is retentivity कि करंट जीरो करने के बावजूद आपके कुछ डाइपोल अलाइंड रह जाते हैं, which means the flux density or the flux becomes non-zero. That is the retentivity, and it is shown as the y-intercept of the graph. So if you see beta, the x-axis is h, which is proportional to current. So even though I have made current zero माने y-axis, but still there is a flux density or there is a flux, and that is called as retentivity. इसी को retentivity के नाम से जाना जाता है, because some dipoles are still aligned to each other. कुछ डाइपोल आपके अभी भी aligned है. Okay. So some dipoles are still aligned. That is why there is a residual magnetism, or you can call it retentivity. इतनी बात समझ में आई ना? Not all dipoles have become random. Okay. So some dipoles are still aligned. Now beta, what you do? The voltage is zero, current is zero. Now what will you do is, just a minute. यहाँ पे थे ना हम. So now if you see beta, when I applied the negative voltage, the current starts to decrease. I move left on the curve and dipoles start to become random. But still some dipoles stay aligned with the magnetic field even when the current is zero. That is the y-intercept, that is called as retentivity. That is called as retentivity. That dipoles continue to stay aligned even when the current is reduced to zero. रिटेंटिविटी का मतलब समझ गए सभी लोग? अच्छे से विजुअलाइज हो गया व्हाट इज रिटेंटिविटी? सी, this dipole, this dipole, this dipole, this dipole, many dipoles are still aligned with the original direction. So that is called as retentivity. And these green lines are their own internal magnetic field. ये green line in dipoles की magnetic field है. Okay? So it continues to stay in the same direction. Now, if you continue to apply negative voltage, बच्चों, the current will start to increase in the reverse direction. So after becoming zero, current will start to increase in the reverse direction. So current flows in the opposite direction. So magnetic field will reverse and dipoles will also reverse. तो करंट उल्टी डायरेक्शन में बहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड पलटेगी और डाइपोल्स भी पलटना स्टार्ट हो जाएंगे. बट एट अ सर्टेन वैल्यू ऑफ करंट, बेटा, द नेट मैग्नेटिज्म विल बिकम जीरो. दैट इज कॉल्ड एज कोअर्सिविटी. एट अ सर्टेन वैल्यू ऑफ करंट, net magnetization will become zero. That is said to be coercivity. Let me show you.
तो बेटा see at this point मेरे बच्चों, at this point the current is non-zero but residual magnetism becomes zero. इस पॉइंट पे देखिएगा तो residual magnetism becomes zero because all dipoles have become random. यहां पे सभी डाइपोल रैंडमाइज हो गए हैं, तो all dipoles have become random. So that is why flux becomes zero at a certain value of negative current. करंट के कुछ नेगेटिव वैल्यू के लिए फ्लक्स जीरो हो गया क्योंकि सभी डाइपोल्स आपके रैंडमली ओरिएंटेड हो गए. तो दैट इज कॉल्ड एज कोअर्सिविटी. दैट इज कॉल्ड एज कोअर्सिविटी. ओके. नाउ इफ यू कंटिन्यू टू अप्लाई वोल्टेज इन द रिवर्स डायरेक्शन, current will continue to increase in the negative direction, magnetic field will reverse, the dipoles will also reverse. अगर आप अभी भी करंट को नेगेटिव में बढ़ाते जाओगे ना तो मैग्नेटिक फील्ड रिवर्स डायरेक्शन में आने लगेगी, डाइपोल्स आपके उल्टा अलाइन होने लग जाएंगे, आपके डाइपोल पलटने लग जाएंगे बेटा, एंड इवेंचुअली दे विल सैचुरेट इन द रिवर्स डायरेक्शन. इवेंचुअली उल्टी डायरेक्शन में सैचुरेशन आपको मिलेगा. इवेंचुअली यू विल गेट सैचुरेशन इन द रिवर्स डायरेक्शन. So if you see, you keep on increasing the current in the negative direction, magnetic field reverses, the dipoles will start to reverse, and once the dipoles reverse and 100% dipoles will reverse, you will get saturation in the reverse direction. तो आपको saturation reverse direction में मिल जाएगा. Okay, you will get saturation in the reverse direction when 100% of the dipoles will reverse. Okay. Like this, saturation in the reverse direction, so 100% dipoles reverse. So this is the point where all dipoles become random and flux density is zero. ठीक है. Okay, all dipoles are random. So what is this retentivity? When you make the current zero, still the dipoles are aligned in the original direction. That is, there is a memory in the system. It remembers the original magnetic field. आप ऐसा समझिए कि आपने करंट जीरो किया, फिर भी डाइपोल उसी डायरेक्शन में अलाइंड हो गए, तो एक तरह से इसके पास एक मेमोरी है, इसे याद है ओरिजिनल डायरेक्शन क्या था. It remembers that beta, and that is retentivity. Now, after saturating in the reverse direction, what we will do is, we will again apply a positive voltage. We will again apply a positive voltage. Okay. Now, all the dipoles are aligned in the reverse direction. Now, again, I will apply a positive voltage, bachcho. When I apply a positive voltage, the current starts to increase. The current will increase. So we will move to the right. Current increase karega. We will move to the right. Dipoles again start to become random. Dipole वापस से धीरे धीरे random होने लगेंगे. But even when you make current zero, all the dipoles still do not become random. All dipoles do not become random and still they are aligned in the original direction. That means your system has a memory. है ना, आपके सिस्टम के पास याददाश्त है, इसे पिछले वाला ओरिएंटेशन याद है. Your dipoles remember the original orientation and they continue to be in that direction. That is retentivity. Retention means memory. It retains the original value. That means it remembers the original value. इसे पिछली value याद है. Now, still if you keep on applying the positive voltage, the current will keep on increasing. The current will keep on increasing. अगर अभी भी positive voltage लगा के रखोगे, तो current अभी भी आपका बढ़ता जाएगा. Current will keep on increasing and eventually all the dipoles at some point will become random. एक समय पे सारे dipole randomize हो जाएंगे. That is called as coercivity. So the magnetic field at which all dipoles become random, that is said to be coercivity, and this time coercivity will be on the positive x-axis.
कोअर्सिविटी इस बार पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे देखने के लिए मिलेगा. Okay, see, if I still apply positive voltage, the current will increase in the positive direction. Okay, now if current increases in the positive direction, dipoles become to randomize. So at the current or the magnetic field where dipoles are 100% random, this is coercivity. This is coercivity. Everything is at random. Then dipoles will align in the positive direction. Again, they will align in the positive direction. Their magnetic field increases in the positive direction, and after a certain value of current it saturates. दोबारा से डाइपोल पॉजिटिव डायरेक्शन में अलाइन होते हैं, उनकी मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव डायरेक्शन में आती है और कुछ समय बाद फिर से सैचुरेशन आ जाता है, एंड दिस लूप इज कंप्लीटेड. दिस लूप इज कंप्लीटेड. अब समझ गए बेटा, रिटेंटिविटी का मतलब, कोअर्सिविटी का मतलब, हिस्टेरेसिस लूप का मतलब. डिड यू नाउ अंडरस्टैंड बेटा एवरी टर्म? अब आप लोगों को सारी की सारी टर्म्स समझ में आ गई? जल्दी बताइए. एवरीबडी अंडरस्टूड ईच एंड एवरी टर्म बच्चों? क्विकली टेल मी. आप लोगों को समझ में आया? जल्दी बताइए. क्लियर हो गया ना सभी लोगों को? नाउ माई ऑब्जेक्टिव इज टू अंडरस्टैंड द हिस्टेरेसिस लॉस. हिस्टेरेसिस एज अ फिनोमिना आई अंडरस्टैंड. I understand this graph, but I want to understand the losses in the hysteresis. मुझे ग्राफ समझ में आ गया, फिनोमिना समझ में आ गया, अब मुझे लॉसेस के बारे में चर्चा करनी है. ओके, नाउ इफ यू अंडरस्टैंड ऑन अ कंसेप्चुअल लेवल बेटा, एवरी टाइम यू आर रिवर्सिंग द फील्ड, द डाइपोल्स हैव टू रिवर्स. जब भी आप फील्ड रिवर्स कर रहे हो तो आपके डाइपोल्स को रिवर्स होना पड़ेगा. ओके, डाइपोल्स को रिवर्स होना पड़ेगा. For that, there is a wastage of energy. There is a wastage of energy in reversal of the dipole, and that causes the energy loss or the hysteresis loss. तो जब डाइपोल्स बार बार रिवर्स होते हैं बेटा, उसमें एनर्जी का वेस्टेज आता है, जिसको कि हम कहते हैं हिस्टेरेसिस लॉस. तो बेटा मैग्नेटिक डाइपोल्स ऑलवेज हैव अ टेंडेंसी टू अलाइन अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड. So if magnetic field reverses every half cycle, dipoles have to reverse. So energy consumed in the dipole reversal after every half cycle is called hysteresis loss, and it is because of the interactive forces between the dipole. तो आप ये समझिए, डाइपोल में जैसे नॉर्थ और साउथ में अट्रैक्शन है बेटा, there is a attractive force between the two dipoles. Okay, so dipoles will apply a force on each other. So when you want to reverse them, this force will oppose the reversal just like friction. It will cause loss of energy. Dipoles आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो जब आप डाइपोल रिवर्स करने की कोशिश करते हैं तो इनके बीच में जो फोर्स है वो इस रिवर्सल को अपोज करता है. दिस फोर्स विल अपोज द रिवर्सल. इट विल ट्राई टू कीप द डाइपोल्स इन द सेम डायरेक्शन, just like friction opposes the motion, and it will cause energy loss. तो ये जो डाइपोल का अट्रैक्शन है ना, ये मोशन को अपोज करेगा जैसे फ्रिक्शन मोशन को अपोज करता है, और इससे क्या आएगा, इससे जो एनर्जी का लॉस आएगा, दैट इज कॉल्ड एज द डाइलेक्ट्रिक लॉस. दैट इज कॉल्ड एज द डाइलेक्ट्रिक लॉस. क्या कहलाएगा? सॉरी, हिस्टेरेसिस लॉस. दिस इज सेड टू बी हिस्टेरेसिस लॉस. सेम फिनोमिना happens in a dielectric when you study the dielectric loss. यही फिनोमिना डाइलेक्ट्रिक में भी देखा जाता है, जिसको हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक लॉस. बट देयर यू हैव इलेक्ट्रिक डाइपोल, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज. वहां इलेक्ट्रिक डाइपोल होते हैं बेटा, प्लस माइनस चार्जेस आपके देखे जाते हैं. हाँ, कह सकते हो एसी में लॉसेस ज्यादा होते हैं डीसी से. यस, यू कैन से दैट एसी इज लेस एफिशिएंट देन डीसी. ओके, now beta, energy lost is the area of the graph multiplied by the volume of the core. So power is energy upon time or energy into frequency, which is area of BH curve into volume of core into frequency. Volume of core into frequency. एक साइकिल का मतलब क्या है? एक साइकिल का मतलब अभी समझाता हूं मैं ग्राफ पे. हाफ साइकिल का मतलब अभी रुक जाओ, ठीक है? So this will go into your short note.
इतना समझ में आया? हिस्टेरेसिस लूप में बेटा हम बार बार ट्रैवल करते हैं, किसी एक पॉइंट पे रुकते नहीं है अंश। वी नेवर स्टॉप एट एनी पॉइंट, वी कीप ऑन ट्रैवर्सिंग द लूप अगेन एंड अगेन एंड अगेन। ओके, हम बार बार ट्रैवल करते रहते हैं लूप में, किसी भी पॉइंट पे रुकते नहीं है। बट इफ यू थिंक इन टर्म्स ऑफ सैचुरेशन, वी ऑपरेट एट द नी पॉइंट। आप ये कह सकते हो सैचुरेशन की टर्म्स में बात करें तो नी पॉइंट पे काम करते हैं, बट हम लूप पे घूमते रहते हैं। तुम्हारा डाउट आई नॉट वाला, अब ये आई नॉट वाला डाउट कहां से आ गया भाई? इसका हिस्टेरेसिस से क्या मतलब? आई नॉट तो लैगिंग होता है, तो वी और आई तो एक साथ जीरो नहीं हो सकते। अरे भाई, वी और आई एक साथ जीरो क्यों नहीं होंगे? इंडक्टर का अगर करंट जीरो हो गया तो वोल्टेज तो जीरो आ ही जाएगा ना। वोल्टेज अगर करंट जीरो हो गया तो वोल्टेज जीरो आ ही जाएगा, ठीक है। तो मैं उस पॉइंट की बात कर रहा हूं कि अगर करंट आपका जीरो है, तो अगर आप करंट को परमानेंटली जीरो रखें तो वोल्टेज विल ऑल्सो स्टे जीरो। बट वैसा हम करते नहीं है, करंट को कभी भी परमानेंटली जीरो नहीं करते हैं, ठीक है। तो वैसा अगर करेंगे नहीं तो यस, वी एंड आई कैन नॉट बी जीरो टुगेदर। अभी रुक जाओ बेटा, ये पर यूनिट वॉल्यूम कैसे आया? रुक जाओ, थामा। मैं इतना ही कहूंगा, थोड़ा सा थम जाओ, चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। अभी खत्म नहीं हुआ हिस्टेरेसिस लॉस, तो ये फॉर्मूला अभी मैं डिराइव कराने वाला हूं। वी आर गोइंग टू डिराइव दिस नाउ। लेट अस डिराइव द हिस्टेरेसिस लॉस। ओके, लेट अस डिराइव द फॉर्मूला फॉर हिस्टेरेसिस लॉस। उम्मीद करता हूं अभी तक सारी बातें क्लियर है बेटा। ओके, नाउ लेट अस डिराइव द हिस्टेरेसिस लॉस। तो द पावर delivered to material is V into I. Power is V into I. Now V is d psi by dt. Voltage क्या होता है? d psi by dt by Faraday's law. Okay, by Faraday's law. So power will be I d psi by dt. Okay. Now psi is n phi. So I n d phi by dt, or you can say mmf into d phi by dt. Now phi is B into area and mmf is h into L. So if you convert power to energy, what is energy beta? You have to integrate power. Energy के लिए क्या करोगे? Power को integrate करोगे, so you can write f d phi. F into d phi. Now F is h into L. This is from the Ampere's law. MMF is h into L. D phi is area into dB. So h dB into area into length. Area into length is volume. H dB. Okay. H dB, or you can also talk about energy density. Energy density means energy per unit volume is integral h dB. क्या है? इंटीग्रल h dB. So h is on the x-axis beta, b is on the y-axis. So area x dy is area between curve and y-axis. Area between curve and y-axis. That is energy going, या energy density going into magnetic field. Okay, and this same concept beta, area between the graph and the y-axis, area between the graph and the y-axis, I will again call it or recall this when we study the energy conversion. When I will teach you how to convert electrical energy to mechanical,
or mechanical to electrical, we will recall this concept that area between the graph and the y-axis is the energy delivered to the magnetic field. जब हम एनर्जी कन्वर्जन पढ़ेंगे ना, एनर्जी को शिफ्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल या मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल, तब मैं फिर से यही कॉन्सेप्ट आप लोगों को बोलूंगा कि ग्राफ और वाई एक्सिस के बीच का एरिया क्या बताता है कि कितनी एनर्जी आपने मैग्नेटिक फील्ड को दी है या कितनी एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड ने सोर्स से ली है. हाउ मच एनर्जी गोज इनटू द मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम द सोर्स. ओके, इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? चलिए, तो नाउ बेटा, now I will apply the sinusoidal flux density. I will apply the sinusoidal flux density or sinusoidal magnetic field like this. This is H versus T. ये H versus T का ग्राफ है. Okay. So this point is E, where H is 0. This point is E. This point is F. Just a minute. H maximum, that is F. Yes. This point is B, where H is again 0. Then this point is D. Saturation in the reverse direction. Then again this point is ये एक सेकेंड, E, F, ये A है. ये F नहीं है, ये A है. This is A. Saturation where H is maximum, that is A. Okay. So these are the points. So beta, 1/2 cycle means going from E to B. That is when H is on the right. Second half cycle means the left side. Positive half cycle का मतलब right side और negative half cycle का मतलब left side, because here H is negative, here H is positive. एनर्जी डिलीवर्ड के बाद नहीं समझ में आया. एनर्जी डिलीवर्ड मैंने किया P dt, dt से मल्टीप्लाई करो बचा F d phi. अब F होता है H into L, मैग्नेटिक फील्ड into लेंथ इज mmf, and phi is B into area, so area comes outside dB. So I take length and area common, area into length is the volume, and in the integration you have H dB. This is the energy. Now energy density is energy upon volume, which is integration H dB. Now H is on the x axis, B is on the y axis. H x पे है, B y पे है, so this is x dy. X dy means the area between the graph and the y-axis. Y dx is the area between the graph and the x-axis. X dy कैसे लेते हैं? ग्राफ और y-axis के बीच का एरिया, और y dx होता है ग्राफ और x-axis के बीच का एरिया. So energy density going into the magnetic field from the supply is area between the graph and the y-axis. ग्राफ और y-axis के बीच का एरिया ये बताता है फील्ड से कितनी एनर्जी आपकी किसके अंदर गई है, सॉरी सोर्स से कितनी एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जा रही है. अब ये समझ गए भाई? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? So this is the complete cycle that I have shown you here from E to A. At E, H is 0. At A, H is positive maximum. Then at B, H is again 0. At D, H is negative maximum. At E, H is again 0. So from E to B, 1/2 cycle or the positive half cycle because H is positive. And from B to again E, that is negative half cycle, H is negative. H आपका negative है. ओके, ये क्लियर हो गया सभी को? बोलो मेरे भाई जल्दी से, यहां तक बात समझ में आ गई? समझ में आ गई सभी लोगों को? कोई डाउट है तो बताओ जल्दी से. एनीबडी, एनी डाउट्स हियर? कम ऑन एवरीवन. किसी का कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, चलें फिर आगे. चलिए, तो नाउ आई विल स्टार्ट ट्रैवलिंग द हिस्टेरेसिस कर्व. तो द फर्स्ट पोर्शन दैट आई चूज बच्चों,
The first portion is this. I choose this region from E to A. From E to A, the area between the graph and the y-axis, ग्राफ और y-axis के बीच का एरिया क्या कहलाएगा? What is the area between the graph and the y-axis? That is your energy going into material. Okay, energy going into the material. So this area I am talking about. The area between the graph and the y-axis. ठीक है? Now beta, in this region, understand carefully. This graph is on the right side. So H is 0. Right side पे H positive आएगा. And if you see, this graph is going up. So B increases. That means dB is positive. ये ग्राफ आप राइट साइड पे बना रहे हैं तो H पॉजिटिव है और यहां पे B बढ़ रहा है तो dB इज पॉजिटिव. तो फ्रॉम E to A, H is positive, dB positive, so H dB positive, and energy density is integral of H dB. Energy absorbed by material. Energy absorbed by material. मटेरियल आपका एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है क्योंकि दिस इज द एनर्जी गोइंग इनटू द मैग्नेटिक फील्ड. तो इफ दिस इज पॉजिटिव इट मींस मैग्नेटिक फील्ड टेक्स एनर्जी फ्रॉम द सोर्स. ये एनर्जी वो है जो मैग्नेटिक फील्ड में जाती है. तो अगर ये पॉजिटिव आ रही है इसका क्या मतलब है कि मटेरियल सोर्स से एनर्जी ले रहा है और यू कैन से मैग्नेटिक फील्ड टेक्स द एनर्जी फ्रॉम द सोर्स. टेक्स द एनर्जी फ्रॉम द सोर्स. इज दैट क्लियर? तो मैग्नेटिक फील्ड सोर्स से एनर्जी ले रही है. बात समझ में आ गई? चमक गई अच्छे से बात? तो दिस एरिया इज द एनर्जी एब्जॉर्ब फ्रॉम द सोर्स. नाउ आई विल गो फ्रॉम ए टू बी. A to B. This region A to B. I have divided the graph into 4 parts: E to A to B, B to D, and D to E. So A to B. A to B means this region. This is the region. So area between the graph and the y-axis is the energy. Area between the graph and the y-axis is the energy. So this area, बच्चों. This area is the energy, correct? This area is your energy between the graph and the y-axis, area between graph and y-axis. Now in this region, beta, B is decreasing. We are on the right side, so H is positive, but B is decreasing. So change in B is negative. B घट रहा है, इसीलिए change in B आपका negative आएगा. So integral of H dB is negative. So if the energy is coming negative, it means energy goes from magnetic field to source. So basically magnetic field is returning the energy to the source. Magnetic field energy source को लौटा रहा है. It is returning the energy to the source. Clear up to here, beta? This part is also clear. Now I will go from B to D. Now I will go from B to D. Okay. B to D. Okay.
So I'm talking about this region. Okay, this region. Now, when I'm going from B to D, beta, I'm going like this. So that means B is decreasing, we are going down. नीचे जाने का मतलब है B का घटना, B is on the y-axis. So dB negative. And we are on the left hand side. So H is negative. हम लेफ्ट साइड पे हैं तो H भी नेगेटिव है. So from B to D, H is negative, dB is negative. So H dB is positive. If H dB is positive, beta, integral of H dB is positive. So if this is positive, energy goes from source to magnetic field. Okay. So if you take the area between the graph and the y-axis, you will see the energy goes from the source to the magnetic field. So this area is positive area. Okay, this area is your positive area. This is the energy going from the source to the magnetic field. Okay. This is the energy going from the source to the magnetic field. Is that clear to everyone? ये बात clear हो गई? That is why, beta, every time I am showing the green area as positive and the yellow area as negative. Okay. सोर्स बेटा जो भी वोल्टेज सोर्स आपने लगाया होगा कोर के साथ, आपने कोई वोल्टेज सोर्स लगाया तभी तो मैग्नेटिक फील्ड बनी है अचिंत. Whenever we connect a voltage source at the primary, it provides a current which generates a magnetic field. That is my source. Now the last part of the graph is D to E. The last part is D to E. In order to complete the loop, I will go from D to E. This part, beta. Now you are going up. आप ऊपर जा रहे हैं. When you are going up, the y coordinate increases. तो b increases. ऊपर जाने का मतलब b बढ़ रहा है. तो dB is positive. But still you are on the left hand side, beta. So h is negative. So from D to E, h is negative. But b is increasing, dB positive. So h dB is negative. Okay. Integral h dB is negative. So energy goes from magnetic field to source. एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड से सोर्स में जाएगी. ओके समझे? नेगेटिव एरिया मींस goes from source to the magnetic field. Source to magnetic field to the source. So I will show this area with yellow. It is a negative area. Okay. So now we have completed the loop. We have obtained two positive areas and the two negative areas. हमें दो पॉजिटिव एरिया मिल गए और दो नेगेटिव एरिया मिल गए. पॉजिटिव एरिया मींस एनर्जी गोज फ्रॉम सोर्स टू द फील्ड. नेगेटिव एरिया मींस एनर्जी गोज फ्रॉम फील्ड टू द सोर्स. पॉजिटिव एरिया का मतलब है एनर्जी सोर्स से फील्ड में जा रही है और नेगेटिव का मतलब है एनर्जी फील्ड से सोर्स में जा रही है. Is that clear, beta? Is that clear? B to D एनर्जी बूस्ट होगी. कह सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी बढ़ेगी. Yes, you can say that. So now, beta, again let me show the positive area as green and negative area as yellow. So this area was negative, yellow. This area was negative, yellow. Okay. Now let me show the positive area, the green area.
ओके, तो ये पॉजिटिव एरिया ग्रीन एरिया हो गया बेटा। द पॉजिटिव एरिया इज द ग्रीन एरिया, क्लियर? पॉजिटिव एरिया इज द ग्रीन एरिया। ये बात क्लियर हो गई बेटा? मैग्नेटिक फील्ड इज लाइक अ इंडक्टर, इंडक्टर कैन स्टोर द एनर्जी एंड इंडक्टर कैन ऑल्सो रिटर्न द एनर्जी। ओके, so this is the entire positive area. So basically beta, this area gets cancelled because positive and negative both are equal in this region, so this gets cancelled. मानते हो ना? Positive negative are both overlapping, so this will get cancelled. Okay, now again let me draw the other positive area. The other positive area is like this. So wherever the positive and negative will overlap, so that area will get cancelled. जहां भी पॉजिटिव नेगेटिव ओवरलैप करेंगे वो एरिया आपका कैंसिल आउट हो जाता है। ओके, इज दैट क्लियर? तो दिस एरिया इज अगेन कैंसिल। तो व्हाट इज नेट एरिया बेटा? पॉजिटिव और नेगेटिव। नेट एरिया क्या आया? पॉजिटिव आया या नेगेटिव आया? आप ही लोग बताइए। ओके, आप ही लोग बताइए। तो एरिया from A to B and from D to E gets cancelled. Net area is equal to area inside hysteresis loop and it is positive. Therefore, energy goes from source to the material. So that means beta, in one cycle the green area represents the energy absorbed by the material. Now again let's go back. What is the meaning of the area? The meaning of the area is energy per unit volume. एरिया का क्या मतलब था? एरिया का मतलब था एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, करेक्ट? द मीनिंग ऑफ द एरिया इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज द मीनिंग ऑफ द एरिया। ओके, so that means energy absorbed per unit volume is area of BH curve. ठीक है, it is the area of the BH curve. Now you can understand this formula. So energy will be area into volume. अगर energy upon volume is the area, so energy will be area of the graph multiplied by volume. Area of the graph multiplied by volume. Power is energy upon time period of one cycle. This is for one cycle. ये जो green area है ये एक cycle के लिए है. We started from E, we ended at E. That is one cycle. So T is the time period of one cycle. So 1 upon time period is the frequency. So power is area of BH curve into volume of core into frequency. अब समझ में आ गया ये फॉर्मूला? How hysteresis loss is defined? Area of the BH graph into volume of the core into frequency. Area of the BH graph into volume of the core into frequency.
Now beta, even if I give you this graph, will you be able to find the area? अगर मैं आपको एक ग्राफ बना के दे दूं तो क्या आप ये ग्रीन एरिया निकाल सकते हो? Can you find this shaded area? No. It is very difficult to find the area. Therefore, there was a scientist called as Steinmetz who gave us a formula that can give the same power as obtained using this method. एक साइंटिस्ट थे स्टीनमेट्स जिन्होंने हमें एक ऐसा फॉर्मूला दिया कि जो पावर यहां से निकलेगी वही उनके फॉर्मूला से निकलेगी, and that is called as the Steinmetz formula used to find the hysteresis loss. Used to find the hysteresis loss. Okay. So Steinmetz gave an empirical formula. Empirical formula means experiment based formula. There is no derivation. Empirical formula means he fit a formula into this value. ये जो loss आ रहा है इसमें एक formula उन्होंने fit करा दिया जिस formula से same value आ जाए. He fit a formula that can give you the same result as the formula actual. है ना, एक्चुअल फॉर्मूले जितनी ही वैल्यू जो दे पाए ऐसा एक फॉर्मूला उन्होंने फिट किया. तो इट वाज KH PM to the power X into F. X is the Steinmetz coefficient, KH is the Steinmetz constant, and this KH also includes the volume of the core. देखो फ्रीक्वेंसी तो अलग से रख दी F, area is BM to the power X, so this KH is also proportional to the volume. ये वॉल्यूम वाला फैक्टर जो है KH के अंदर चला गया. दिस फैक्टर ऑफ वॉल्यूम गोज इनटू KH. तो अर्लियर द वैल्यू ऑफ X वाज 1.6 बट द लेटेस्ट वैल्यू ऑफ X एज पर IEEE इज 2. लेटेस्ट वैल्यू ऑफ X आपकी 2 आती है, पुरानी वैल्यू 1.6 हुआ करती थी. तो इन द ओल्ड बुक्स यू विल फाइंड 1.6 बट एज पर द न्यू स्टैंडर्ड्स इन योर एग्जाम यू हैव टू यूज द वैल्यू एज 2. आपको वैल्यू 2 इस्तेमाल करना है. इज दैट क्लियर? तो नाउ बेटा BM इज द पीक फ्लक्स डेंसिटी. BM is proportional to V by F. V by F. So pH is proportional to BM to the power X into F. V by F to the power X into F. Or V to the power X, F to the power 1 minus X. F to the power 1 upon F to the power X, F to the power 1 minus X. Okay. So case 1. If BM is constant, that is V by F is constant, hysteresis loss is proportional to F, or you can write K1 F. अगर V by F constant रखोगे it is K1 F. Case 2. BM is not constant. Eddy current loss, hysteresis loss is proportional to V to the power X, F to the power 1 minus X, and since X is 2, it is proportional to V square by F. V square by F. ये V square by F के proportional आ जाता है. Understood बेटा? So these two cases can be used in the numerical. So in the numerical, we don't have to use the area formula. We have to use the Steinmetz formula. हमें Steinmetz formula लेना होता है. एरिया वाला एक्सप्रेशन हम न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल नहीं करते हैं. क्लियर बेटा? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? चलिए अब मुझे बताओ हिस्टेरेसिस में अगर कोई डाउट है. एनी डाउट इन हिस्टेरेसिस, देन आई विल मूव ऑन टू द एडी करंट लॉसेस. फिर मैं एडी करंट लॉसेस पे चलूंगा. अगर हिस्टेरेसिस क्लियर है तो बोलिए. क्लियर है? चलो, so shall I move ahead? Now let's come to the eddy current losses. What are eddy current?
बेटा एडी का मतलब होता है भंवर, समुद्र में जो भंवर होता है ना, सर्कुलर लूप्स। तो एडी करंट इज बेसिकली करंट फॉलोइंग द सेम पैटर्न एज द एडी इनसाइड अ सी। समुद्र में एडी की तरह जो करंट फ्लो करेगा, उसे कहते हैं एडी करंट। तो दे फ्लो इन द सर्कुलर लूप। तो व्हाट हैपेंस इज, एफ कैसे कट हो जाएगा गधा राम? एफ की वैल्यू क्या है यहां पे? 1 माइनस एक्स, एक्स को रखा 2, तो एफ की पावर -1 आया, तो एफ नीचे आ गया ना भाई। मैंने कितनी बार बोला है, पेन पेपर कुछ मत लेके आओ, बस बुद्धि लेके आओ। वो काहे मिस कर देते हो क्लास में आने से पहले? अब सुनिए ध्यान से। नाउ बेटा, whenever your core carries an alternating field, the magnetic field in the core is alternating, correct? This is the magnetic field. It keeps on reversing the direction. So the flux through the core is also alternating. core से गुजरने वाला फ्लक्स भी alternating होता है. And this causes EMF and current to be induced in a material. ठीक है, मटेरियल से गुजरने वाला फ्लक्स जब ऑल्टरनेटिंग होगा तो इससे मटेरियल में ईएमएफ इंड्यूस होगा और करंट्स आएंगे, एंड दीज करंट्स विल फ्लो इन अ सर्कुलर लूप कॉल्ड एज द एडी करंट। ये सर्कुलर लूप में फ्लो करेंगे, जो करंट इंड्यूस होंगे दे आर सेड टू बी एडी करंट, एंड दे विल कॉज द हीटिंग कॉल्ड एज द एडी करंट लॉस। इनकी वजह से हीटिंग आएगी, जिसे हम कहेंगे एडी करंट लॉस, एडी करंट लॉस। ओके, चलिए। नाउ देयर माइट बी वन क्वेश्चन बेटा, देयर माइट बी वन क्वेश्चन दैट somebody may ask you in an interview. Why do eddy current flow in a circular loop? ठीक है, द आंसर इज बेटा, फॉर एनी एरिया circle is the geometric figure having minimum circumference. सर्कल एक ऐसा फिगर है बेटा जिसका सरकमफेरेंस सबसे कम होता है। Therefore, path length of eddy current gets minimized. एडी करंट का पाथ लेंथ बहुत छोटा हो जाता है, एंड रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑल्सो बिकम्स मिनिमम। तो एडी करंट बेसिकली follows a path of minimum resistance. Understood beta? Why circular loop? मिनिमम रेजिस्टेंस के रास्ते को फॉलो करता है, एंड दैट इज वाई बेटा, दैट इज वाई इट इज फॉलोइंग द सर्कुलर लूप। इसी वजह से सर्कुलर लूप आपका बन रहा है। ओके, इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? तो नाउ बेटा, now we basically laminate the core in order to minimize the eddy current loss. How it reduces the eddy current loss, अभी उस पे आएंगे, ठीक है? We will come to that, how it will reduce the eddy current loss. Now let us visualize बेटा. This is a winding on the core of a material. ये core के ऊपर मैंने winding लपेट दी है. So this winding is producing a clockwise magnetic field. एक clockwise magnetic field यहाँ पे बना रही है. It is producing a clockwise magnetic field. Now this magnetic field varies with time. Why? Because H is proportional to current. Current is a function of time. Therefore H is also a function of time.
h भी फंक्शन ऑफ टाइम है. Now beta, when this magnetic field cuts this area, this is the area, this is the cross sectional area. When this magnetic field crosses this area, if I see from this side, this is my observer. If I see from this side, if I stand this side, it will appear that magnetic field is coming to me. अगर मैं इस तरफ से देखूं तो मुझे लगेगा मैग्नेटिक फील्ड मेरी तरफ आ रही है. So this is the observer point of view that magnetic field is coming outside. Now as per the Lenz's law, the magnetic field produced by the current induced, जो induced current magnetic field बनाएंगे, that should be opposite to the applied field. So the induced field should be inverse, so currents will flow clockwise. Magnetic field जो induced होगी, that will be opposite to the applied field. That will be opposite to the applied field, so currents will flow in the clockwise. Current कैसी direction में flow करेंगे बेटा? They will flow in the clockwise direction. They will flow in the clockwise direction, and these currents are said to be eddy current. ये current क्या कहलाएंगे? They are said to be eddy current. Understood? Is that clear beta? Is that clear? So my eddy currents are inverse, but this I have already explained. Now let's derive the derivation or the formula for the eddy current loss. समझ में आ गया ना eddy current क्या होते हैं बेटा? Everybody understood? Now let me take one lamination. Let me take बेटा one lamination of the core. मैं core का एक lamination लेता हूं. This is one lamination of the core. Okay. Now I will say that eddy current will flow in a closed path. I am approximating the path as a rectangle for ease of calculation. Calculation आसान बनाने के लिए I am taking a rectangle. So I am saying that magnetic field is outwards, so current will be clockwise. Okay. अभी दिखाया ना मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड थी तो करंट वाज क्लॉकवाइज. So I need to find the loss due to this current. मुझे इस करंट की वजह से लॉस निकालना है. So I take a central line. Okay. From central line, this distance is x and this distance is also x. That is the width of the loop is 2x. The width of the loop is 2x. This is t by 2, t by 2. So this is the thickness of the lamination t. ये lamination का thickness हो गया t, t by 2 on both the side. Central line से t by 2 on both the side. Now, I will first say flux is B into area. B into area. So what is the flux passing through inside of the loop? Flux इस red वाली loop से कितना गुजर रहा है? So if I take this length as h, height as h, so what is the width of the loop? X, height is h, so area is h into 2x. h into 2x. Understood? इसकी width हो गई बेटा 2x, height हो गई h, तो इस loop का area हो गया 2x into h. That is the flux passing inside the loop. Okay, this is the flux passing inside the loop. Now B is alternating. So I will take B as Bm sin omega t. Okay, flux density is Bm sin omega t. So this is my flux. Flux varies with time. Now there is no
कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द कोर नॉट द वाइंडिंग। मैं कोर की बात कर रहा हूं, वाइंडिंग की नहीं। तो नंबर ऑफ टर्न्स की तो बात ही नहीं होगी। ओमेगा cos ओमेगा t, this is the EMF induced. Now to find the loss, I need the resistance. So resistance of this thin loop is rho L by A. Now the length. What is the length beta? Length is the perimeter. Length क्या है? Perimeter है. And area is always taken perpendicular to the current. एरिया हमेशा करंट के परपेंडिकुलर लिया जाता है। तो दिस इज द थिकनेस dx and I will say this is the width w. ये width आ गई w. So this area is perpendicular ना बेटा। Suppose current is downwards. So current is downward, the mobile phone is the area. So this thickness is dx. This thickness, this thin strip is dx and the depth is w. Depth is w. Current downwards है बेटा, तो एरिया ये फोन वाला एरिया लेंगे, तो ये जो सामने वाली थिकनेस है ये dx हो गई और ये जो इसकी गहराई है ये w हो गई। सो एरिया विल बी w dx. What about the length? Length is the perimeter or circumference. Length is the circumference of red loop. रेड लूप का सरकमफेरेंस। अब एक रेक्टेंगल का सरकमफेरेंस क्या होता है? 2 इंटू लेंथ प्लस हाइट। ओके, एंड एरिया W dx। यहां तक समझ में आया बेटा? एरिया W dx। अरे मेरे भाई, हमें वो करंट नहीं चाहिए जो इस मैग्नेटिक फील्ड को बनाए चित्रा। हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड एडी करंट बनाएंगे वो अंदर की तरफ होनी चाहिए। उसके लिए करंट क्लॉकवाइज आएंगे। द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय एडी करंट विल बी अपोजिट टू दिस फील्ड, so the current should be clockwise, okay, according to right hand rule. Why eddy current forms circular loop? Beta, every current wants to follow a path of minimum resistance. Now if you take this area, fix this area, in this area circle is a path which has minimum circumference or minimum length. Now resistance is proportional to the length. So if the length is minimum, circumference is minimum, resistance is minimum. So eddy current flows in a path of minimum resistance. अरे भाई, किसी भी एरिया को अगर फिक्स कर दो, जैसे आपने बोला मुझे 5 मीटर स्क्वायर एरिया रखना है, अब उसमें कौन सी फिगर होगी जिसका सरकमफेरेंस सबसे कम है? तो वो फिगर होगी सर्कल। फॉर द सेम एरिया circumference will be minimum, so the length of the path of eddy current is minimum. और लेंथ मिनिमम तो रेजिस्टेंस मिनिमम, रेजिस्टेंस मिनिमम तो आपका मिनिमम रेजिस्टेंस का पाथ करंट को मिल गया। ओके, दिस इज क्लियर अप टू हियर बेटा? सो नाउ आई विल राइट द रेजिस्टेंस रो इनटू 4x plus 2h by area W dx. Now beta, power loss, I know the voltage, I know the resistance, E square by R. E square is 4x square h square omega square bm square cos square omega t divided by rho 4x plus 2h by W dx. Okay. Now beta, this x is much smaller than h. ये जो x है ना, ये h से बहुत छोटा है, तो 4x is much smaller than 2h. This thickness is much smaller than the height of the lamination. So I will say dp 4h square omega square bm square cos square omega t into x square dx W
डिवाइडेड बाय रो इंटू 2h। तो 4h स्क्वायर बाय 2h 2hw इंटू ओमेगा स्क्वायर bm स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t x स्क्वायर dx by rho. Now if you want to find the total power, integral dp, टोटल पावर चाहिए बेटा। दिस इज द लॉस इन अ थिन फिलामेंट, ये लॉस पतले से फिलामेंट का है। नाउ दिस x कैन गो अप टू t/2, x की लिमिट क्या है t/2। एडी करंट रिवर्स क्यों, मैं समझा नहीं बेटा, रिवर्स क्या कहना चाहते हो प्रियंका। तो दिस x कैन गो अप टू t/2। तो x स्क्वायर इंटीग्रेशन इज x³/3, so can I say t³/3 into 8? Because if you put x equal to t/2, it will be t³/8. So cancel this 24, so it will remain 12. 24 का 12 बन जाएगा। Now beta, it is varying with time. It is varying with time. Now average loss for this, average value of cos square omega t, cos square omega t का average, how to take, see, cos square omega t is half plus cos 2 omega t by 2. तो कांस्टेंट टर्म इज द एवरेज। मैंने cos स्क्वायर ओमेगा टी को लिखा 1 प्लस cos 2 ओमेगा टी बाय 2, तो एक कांस्टेंट टर्म एवरेज कहलाएगा। तो इफ यू कैलकुलेट द एवरेज लॉस, इट इज HW ओमेगा स्क्वायर BM स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा टी इज हाफ t³। तो HWT ओमेगा स्क्वायर इज 2πf स्क्वायर BM स्क्वायर t स्क्वायर। तो बेटा हाइट इंटू विड्थ इंटू थिकनेस इज वॉल्यूम। दिस इज 2πf स्क्वायर 4π स्क्वायर f स्क्वायर 4/24 1/6। 4/24 is 1/6. So eddy current loss per unit volume is this formula that I told you in the first lecture. ये फॉर्मूला मैंने आपको पहले लेक्चर में ही बता दिया था बेटा। The unit is power per unit volume, watt per meter cube. Okay. So this is your eddy current loss. So we write this P eddy as KE PM square F square. Now KE is pi square T square by 6 rho. KE is a constant, pi square T square by 6 rho. And that is why we do lamination to reduce the thickness. लैमिनेशन हम लोग क्या करते हैं, थिकनेस रिड्यूस करने के लिए करते हैं, सो दैट एडी करंट लॉसेज आर लो। इससे एडी करंट लॉस अपने काफी कम हो जाते हैं। इज दैट क्लियर बेटा? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? बोलिए, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? टू रिड्यूस द एडी करंट लॉस यू डू द लैमिनेशन। एडी करंट का पाथ रिवर्स क्यों है? अभी अभी चित्रा को बताया, मैग्नेटिक फील्ड से करंट डिसाइड नहीं हो रहा प्रियंका, इस मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करने के लिए एडी करंट आए हैं। तो इस मैग्नेटिक फील्ड से अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड बननी चाहिए, जिसके लिए एडी करंट का क्लॉकवाइज होना जरूरी है। यू डोंट वांट टू सपोर्ट दिस फील्ड, यू वांट टू अपोज दिस,
as per the Lenz law, as per the Lenz law. फॉर्मूला इज इनफ. अगर कोई चीज आपको एग्जाम में लेके जाने की जरूरत है तो उसको मैं शॉर्ट नोट्स में मार्क कराऊंगा. यू हैव टू ओनली डू द रिवीजन ऑफ द फॉर्मूला और द शॉर्ट नोट्स, नॉट द ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ द डेरिवेशन, बिकॉज दैट इज वेस्टेज ऑफ टाइम. ये क्लियर हो गया भाई? सो नाउ बेटा केस 1, if bm is constant, that is v by f is constant, eddy current loss is proportional to f square. Okay, bm square f square, so proportional to f square. Case 2, bm is not constant, so v by f is not constant. Okay, so eddy current loss proportional to bm square f square proportional to v by f square into f square proportional to v square. अब आप लोगों का जो डाउट था सर कोर लॉसेस को स्केल करना क्यों डिफिकल्ट है, बिकॉज बेटा डिपेंडेंसी ऑफ बोथ कंपोनेंट ऑफ कोर लॉसेस इज डिफरेंट. एडी करंट इज प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, हिस्टेरेसिस लॉस इज प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर बाय एफ. So that means if you change the frequency, you cannot say what is the exact dependency on the frequency. अगर आप फ्रीक्वेंसी बदलोगे तो ये कैसे बताओगे कि क्या प्रोपोर्शनैलिटी है फ्रीक्वेंसी से, क्योंकि एक तो v स्क्वायर पे डिपेंडेंट है और दूसरा v स्क्वायर बाय f पे. So both do not have the same dependency on the frequency. So you cannot say how will the core loss change with frequency. ठीक है, इतना एक लैमिनेशन में आएगा. So if you reduce the, if you change the volume to overall volume of the core, अगर यहां एक लैमिनेशन के वॉल्यूम की जगह वॉल्यूम ऑफ कोर रखोगे तो टोटल वैल्यू आ जाएगा, है ना. इंस्टेड ऑफ वॉल्यूम ऑफ वन लैमिनेशन यू कैन पुट वॉल्यूम ऑफ द एंटायर कोर. नाउ बेटा इन द मॉर्निंग वी लर्नड दैट, मॉर्निंग में हमने क्या सीखा, दैट वी कैन बेसिकली calculate the core losses using the open circuit test. core loss open circuit test से हम लोग निकाल सकते हैं. So that is how you can find the total core loss. But how to separate the core loss? How to separate the core loss into hysteresis and the eddy current loss? core loss को कैसे hysteresis और eddy current loss में break करेंगे? So now बेटा if your bm is constant, eddy current loss is proportional to f square. If bm is constant, hysteresis loss is proportional to f. Hysteresis loss is proportional to f. So basically you conduct open circuit test. You conduct open circuit test at multiple values of frequency but keep v by f constant. आप ओपन सर्किट टेस्ट करिए अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे बट v by f कांस्टेंट. इफ v by f is constant, hysteresis loss proportional to frequency, eddy current proportional to frequency square. So k1f plus k2f square. Core loss is k1f plus k2f square. So core loss upon frequency is k1 plus k2f. So you conduct the open circuit test at different v and f, keeping v by f constant. In every case note the wattmeter reading. vf ऐसा रखिए, v by f constant रखिए और हर केस में wattmeter reading लेके टेबल बना लीजिए. Suppose I conduct the test at 10 hertz, then 20 hertz, then 30 hertz, then 40 hertz, then 50 hertz. I will make a table 10, 20, 30, 40, 50 and wattmeter reading in each case. Then divide the wattmeter reading by frequency. Divide the core loss by frequency. Core loss is the wattmeter reading. So divide wattmeter reading by frequency. तो जो भी wattmeter readings आ रही हैं उन्हें frequency से divide करिए. You will get core loss upon frequency. Now this is the y-axis and x-axis is the frequency. ये y-axis है, x-axis frequency है. So this is a straight line. Y equal to mx plus c.
m x plus c. तो k1 is the intercept, k2 is the slope. k1 intercept है और k2 slope है, ठीक है. तो you can find k1 and k2 and then you can find hysteresis and eddy current loss. तो अगर आप p कोर अपॉन फ्रीक्वेंसी को फ्रीक्वेंसी के अगेंस्ट प्लॉट करें, लीनियर ग्राफ मिलेगा जिसका इंटरसेप्ट है k1 और जिसका स्लोप है k2. k1 k2 आने के बाद हम हिस्टेरेसिस और एडी करंट लॉस निकाल सकते हैं k1 इंटू एफ और k2 इंटू एफ स्क्वायर से, ठीक है. और जब तक मेंशन ना हो ऑलवेज टेक v बाय एफ कांस्टेंट. अगर सवाल में ना दिया हो तो v बाय एफ कांस्टेंट लेके चलिएगा. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? So that is how you separate the iron loss into hysteresis and eddy current. And sir, why you have shown dotted line? Because beta at 0 hertz I do not have a reading. 0 hertz पे मेरे पास रीडिंग नहीं है. 0 hertz is DC. I cannot conduct open circuit test at DC. मैं ओपन सर्किट टेस्ट डीसी पे कंडक्ट नहीं कर सकता, इसीलिए मेरे पास 0 हर्ट्ज पे कोई रीडिंग अवेलेबल नहीं है. So I have to extrapolate the curve to the y-axis. मुझे ग्राफ को पीछे एक्सटेंड करके y-axis पे जाना पड़ेगा. मेरे पास ये y-axis वाली रीडिंग नहीं है. I do not have the reading on the y-axis because at y-axis frequency is 0, which is DC. I cannot conduct the test at DC. So I will start at suppose 10 hertz and then I will extend the graph to the y-axis. तो 0 से तो स्टार्ट नहीं करूंगा, मान लो 10 हर्ट्ज से स्टार्ट करता हूं, फिर ग्राफ को पीछे खींच के y एक्सिस पे लेके आ जाऊंगा. अंडरस्टूड? नेक्स्ट इज द स्ट्रे लोड लॉस. कैन यू टेल मी व्हाट आर स्ट्रे एनिमल्स? स्ट्रे एनिमल्स आर दोज व्हिच रोम हियर एंड देयर. दे डू नॉट हैव एनी फिक्स्ड लोकेशन. स्ट्रे एनिमल वो आवारा जानवर होते हैं जो इधर से उधर घूमते हैं, उनका लोकेशन फिक्स नहीं है. सिमिलरली बेटा, stray losses are those whose location in the electrical machine is unknown or random. जिनका लोकेशन रैंडम है या अननोन है, they are said to be the stray losses. And why it is called as the load? Because they depend on the load current. ये लोड करंट पे डिपेंड करते हैं, that is why the term is load. So stray means the location of these losses is unknown. They can occur in any iron part of the machine. So why do stray load losses occur? Because of the variation in the electric and magnetic field. So because your electric and magnetic field vary with the load current, therefore the stray losses occur. तो करंट के साथ ये जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड बदलते हैं, इनकी वजह से स्ट्रे लॉसेस आते हैं. तो एक्चुअली व्हाट हैपेंस इज बेटा, when the winding carries a current, it will produce a flux and there will be certain leakage. जब वाइंडिंग में करंट बहेगा तो फ्लक्स बनेगा और कुछ लीकेज होगा. Now this leakage flux can link the iron part of the transformer like the screws, like the tank, and induce EMF and eddy current in those iron parts. उन आयरन पार्ट्स में ईएमएफ और एडी करंट बना सकता है, जैसे कि पेच या ट्रांसफार्मर का टैंक. एंड दैट फ्लक्स विल कॉज द एडी करंट एंड द लॉसेस व्हिच विल बी काउंटेड एज द स्ट्रे लोड. व्हाई नॉट एडी करंट लॉस? एडी करंट लॉस इज टेकन इन द कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर एंड द एडी करंट लॉस इन द बॉडी ऑफ द ट्रांसफार्मर इज कॉल्ड एज द स्ट्रे लोड लॉस. तो लीकेज फ्लक्स डिपेंड्स ऑन द करंट. लीकेज फ्लक्स मैंने पहले भी बताया था करंट के प्रोपोर्शनल है. जब आपने प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर पढ़ा, वी सॉ लीकेज फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू द करंट. So it depends on the load. Hence the EMF depends on the current and the eddy current will also depend on the load. So these losses depend on the load and they occur in random parts of the transformer. Hence they are called as stray load losses. इसीलिए क्या कहलाते हैं बेटा? Stray load losses, क्योंकि इनका लोकेशन फिक्स नहीं है, ये रैंडम लोकेशन पे होते हैं और ये करंट के प्रोपोर्शनल आते हैं. दे आर प्रोपोर्शनल टू द करंट. So practically these losses are less than 0.5% of the rating, therefore ignored, and their location is random. It is not fixed
and they depend on the current carried by the winding. So that is why they are stray load. Load means depend on the load. Stray means location is unknown. Now, because they depend on the current, they are a part of variable loss. क्योंकि करंट पे डिपेंड करते हैं, they are a part of variable loss. So these are similar to the eddy current losses and are due to the induced EMF because of the leakage flux. Leakage flux से जो induced EMF आता है उसकी वजह से होते हैं in different iron parts of the transformer, that is called as the stray load loss. So if such losses will occur in the iron part, they are said to be stray iron loss. If these losses occur in the copper winding, that means even in the copper winding there are eddy current, so they are called as stray copper loss. To minimize the stray copper loss, you can use a stranded conductor. स्ट्रे कॉपर लॉस मिनिमाइज करने के लिए नॉर्मल कॉपर वायर की जगह यू कैन यूज द स्ट्रैंडेड कंडक्टर. And to minimize the stray iron loss, instead of making the tank using iron, use aluminium because aluminium is paramagnetic. Stray iron loss कम करने के लिए आयरन की जगह एल्यूमिनियम यूज कीजिए. पैरामैग्नेटिक है, परमिएबिलिटी लो है, फ्लक्स डेंसिटी लो रहेगी, EMF will be low, so losses will also be low. So they can occur due to eddy current in the iron parts of the transformer or the copper winding. तो अगर eddy current copper winding में आए, stray copper loss. eddy current transformer के टैंक में, उसके पेचों में या बाकी आयरन पार्ट्स में आए तो stray iron loss. तो आप आयरन को अगर एल्यूमिनियम से रिप्लेस कर दें ट्रांसफॉर्मर बॉडी में, you can reduce the stray iron loss. और stray copper loss के लिए क्या करिएगा? Instead of a straight conductor, use multiple thin wires that are twisted together called as stranded conductor. पतली पतली वायर लीजिए जिन्हें साथ में चोटी की तरह गूंथ दिया जाए, उसे स्ट्रैंडेड कंडक्टर कहते हैं. उसमें स्ट्रे कॉपर लॉस कम आएगा. The last is the dielectric loss, the loss that occurs in the insulating part of a transformer. जो ट्रांसफॉर्मर में इंसुलेशन है, like there is bushing, the insulation between the core and the winding. बुशिंग में कोर और वाइंडिंग के बीच के इंसुलेशन में the losses that will occur is called as the dielectric loss. So in a insulating material you do not have free electron and that is why they are unable to carry current. आपके इंसुलेटिंग मटेरियल में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, जिस वजह से वो करंट कैरी नहीं कर पाते. तो there are dipoles, just like a magnet has a north pole south pole, an insulator has positive and negative charge dipole. जैसे मैग्नेट में मैग्नेटिक डाइपोल आता है, इंसुलेटर में इलेक्ट्रिक डाइपोल आता है, प्लस और माइनस चार्ज. तो बेटा जस्ट लाइक देयर आर हिस्टेरेसिस लॉस इन अ मैग्नेट, देयर आर डाइलेक्ट्रिक लॉस इन अ इंसुलेटर. सो देयर आर टू रीजंस फॉर डाइलेक्ट्रिक लॉस. डाइलेक्ट्रिक लॉस के दो कारण होते हैं. फर्स्ट, even though it is an insulator, resistance is not infinite. माना इंसुलेटर है बट रेजिस्टेंस मेरे भाई इनफाइनाइट नहीं होता. तो even though you apply a voltage to a insulator, a small current will flow. वोल्टेज अप्लाई करने पे बेटा छोटा सा करंट जरूर फ्लो करेगा, that is leakage current, and that will cause the dielectric loss. And in dielectric you can also understand a current called as the displacement current. Dielectric में current आता है बेटा due to displacement of charges between the dipole called as displacement current. To understand it easily, the current C dV by dt is the displacement current. जैसे dielectric एक कैपेसिटर की तरह बिहेव करेगा, तो जो करंट C dV by dt होगा, that is your displacement current. So due to those displacement current there are losses because dielectric is not a perfect insulator. Dielectric एक perfect insulator नहीं होता है और इसीलिए इसको क्या कहते हैं? Dielectric loss. दूसरा रीजन क्या होता है बेटा? Due to alternating, जैसे कोर में ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड से
डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल बार बार पलट रहे थे. जस्ट लाइक इन अ मैग्नेटिक कोर, मैग्नेटिक डाइपोल कीप ऑन रिवर्सिंग ड्यू टू ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड. सेम वे इलेक्ट्रिकल डाइपोल्स विल कीप ऑन रिवर्सिंग ड्यू टू ऑल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड. आपने देखा ना, जब जब आपकी मैग्नेटिक फील्ड पलटी तो आपके डाइपोल पलट गए. ऐसे ही जब जब इलेक्ट्रिक फील्ड पलटेगी तब तब आपके डाइपोल पलटेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल. So that loss is also called dielectric loss. So dielectric loss has two components. One is due to the leakage current because no insulator is a perfect insulator. Second is due to reversal of dipoles in every half cycle. हर आधी साइकिल में डाइपोल्स के रिवर्सल से जो आता है लॉस उसे भी कहते हैं डाइलेक्ट्रिक लॉस. ओके, so this leads to the heating of the dielectric or the insulation. So these losses are very small, 0.2% of the rating, therefore they are ignored. But they do not depend on the current, they depend on voltage and frequency. है ना? और इसका जो फॉर्मूला है ना बेटा, this we will derive in power system. This is dielectric loss. So it depends on the frequency and voltage. शिवांगी जी, लीकेज फ्लक्स आपका वाइंडिंग करंट I1 I2 पे डिपेंड करता है, तभी तो लीकेज रिएक्टेंस सीरीज में दिखाई थी. द लीकेज फ्लक्स डिपेंडेड ऑन द वाइंडिंग करंट, so the leakage EMF depends on the winding current and hence the leakage reactance is shown in series. नो लोड करंट पे डिपेंड करता है म्यूचुअल फ्लक्स, नॉट द लीकेज फ्लक्स, क्योंकि नो लोड पे कोई लीकेज की बात ही नहीं होती. वी ओनली टॉक अबाउट द म्यूचुअल फ्लक्स. सोचो ना, नो लोड पे सेकेंडरी करंट जीरो है, किस बात का लीकेज. So there are two components of dielectric loss: leakage current because insulation resistance is finite, and due to reversal of dipole, electric dipole every half cycle of electric field. Okay. In every half cycle of electric field, the dipoles will reverse. समझ में आया dielectric loss? So dielectric loss and core loss are constant loss. They do not depend on the current. Core loss and stray loss depend on the current. They are variable loss. So variable losses are those which vary with the load or the current. जो load या current के साथ vary करे, that is variable loss. And one which does not vary with the load or the current is the constant loss. So core loss and dielectric loss both depend on voltage and frequency, whereas the copper loss and stray load loss depend on the winding current. How stray loss occur in the copper winding? Rishu beta, just like transformer के iron part से leakage flux ने eddy current बनाया. Just like leakage flux causes eddy current in the iron part, similarly leakage flux can also cause eddy current in the copper winding. Copper is a cylindrical conductor. Winding is a cylindrical conductor. Cylindrical ही तो होती है वायर. In that also you can have circulating current called as eddy current, causing the stray copper loss. वायर में भी छोटे छोटे लूप में करंट अगर बहने लग गया तो उससे जो एडी करंट लॉस आएगा उसे हम कहेंगे स्ट्रे कॉपर लॉस. क्या कहेंगे? स्ट्रे कॉपर लॉस. ओके, इज दैट क्लियर बेटा? इज दैट क्लियर? चलिए, तो सी दिस क्वेश्चन बेटा. The open circuit test data on the LV side is given. Hysteresis loss is being asked. So if you see V by F beta, 200 by 50. So iron loss is like this. Correct? समझ में आया ना ये? So you can say 50 iron loss by 50, iron loss by frequency, then 20 by 30.
सब्ट्रैक्ट बेटा K2 is 1 by 60, so K1 1 by 6. So hysteresis loss 1 and hysteresis loss 2. Answer is D. This K1F is the hysteresis loss, K2F square is the eddy current loss. K1F hysteresis loss और K2F square eddy current loss कहलाएगा. ओके चलिए ट्राई दिस बेटा. सेम मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी BM इज कांस्टेंट. चलिए ट्राई कीजिए यूजिंग द सेम मेथड. ट्राई दिस बच्चों, यूज द सेम मेथड. आया भाई इसका आंसर. अगेन देखो बेटा, whenever BM is constant, hysteresis loss is K1F, eddy current loss is K2F square. So iron loss is K1F plus K2F square. So 50 by 40 है ना. आयरन लॉस बाय फ्रीक्वेंसी इज K1 प्लस K2F. फ्रीक्वेंसी इज 40, देन 100 by 60, फ्रीक्वेंसी इज 60. नाउ सब्ट्रैक्ट बेटा. 5 by 4 minus 5 by 3. 1 by 4 minus 1 by 3 is, sorry, 5 by 3 minus 5 by 12. So that means K2 is 5 by 240. So 5 by 4 minus 5 by 6. So 1 by 4 minus 1 by 6, 2 by 24, 1 by 12. 5 by 12 plus 5 by 6. 10 by 12, 15 by 12, 5 by 4. Okay. So now at 50 hertz beta, iron loss is K1 into 50 plus K2 into 50 square. $72.916. 73 watt. Very good everyone. 73 watt. Very good. चलिए try the next one beta. Try the next one. Hysteresis loss of 200, eddy current loss of 100 at 50 hertz, core loss at 60 hertz. Now when nothing is mentioned, always take V by F constant. अगर कुछ भी ना दिया जाए तो V by F constant लीजिए.
If nothing is mentioned, okay, so that means hysteresis loss is proportional to frequency, eddy current to frequency square. This is the most important concept, beta. So at 60 hertz, two hundred into 60 by 50. 200 into 60 by 50. So it is 240. At 60 hertz, PE2 by PE1. Just a minute. एक minute. F2 by F1 square. So 100 into 60 by 50 square. 1.2, 144. So total will be 240 and 144, 384 watt. Total आया 384 watt. Next try करें. This is a gate problem. Gate का question है. चलो let us see this beta. An open circuit test is performed on a 50 hertz transformer using variable frequency but keeping V by F ratio constant to separate hysteresis and eddy current loss. The variation of core loss by frequency versus frequency is shown in the figure. So this intercept is K1. What is the slope? .3. Now hysteresis loss is K1F. 10 into 25 because it is asking at 25 hertz, 250 watt. C. Answer is C. Very good. Chalo, next one.
क्या आ रहा है भाई? डी आ रहा है। ओके, so beta 400 by 50, if you see transformer is 400 volt 50 hertz and it is supplied at 200 volt 25 hertz. So that is, you can say V by F is constant. दोनों केसेस में V और F का रेशियो सेम है, तो आयरन लॉस विल बी K1F प्लस K2F स्क्वायर। ठीक है, तो 2400 by 50, because at 50 hertz it is 2400, K1 plus 50 K2, then 800 by 25, at 2500 hertz it is 800. So when you take the difference 25 K2, 25 3 75 32 48 16, K2 is 16 by 25, that is 0.64. Okay, now K1 will be how much? 32 48 16. Now at 50 hertz beta, hysteresis loss is 16, K1 into 50. Eddy current 1600 watt. So 800 and 1600. Okay. Chalo. Try the next one. Last question. बेटा 16 ही तो आएगा. This is 48, this is 32. तो 16 ही तो आएगा डिफरेंस. चलो देखें, हिस्टेरेसिस एंड एडी करंट लॉस एट 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज इज पीएच एंड पी 160 40 हर्ट्ज. So again 200 by 50 is 160 by 40. So in each of these questions, first you have to check V by F. Okay. So pH2 by pH1, it will be proportional to frequency. 40 by 50 pH. So 0.8 pH. That is 80% pH. So what is the reduction? Reduction is 20%. ठीक है, 20% रिडक्शन हुआ. (64% PE). So what is percentage reduction? 36%. Okay, 36%. So 20 and 36 B. ठीक है, so first you have to check V by F constant. So that's it बच्चों. इसके आगे डेली क्विज और इंटरव्यू क्वेश्चन मैं आप लोगों को कल कराऊंगा इस टॉपिक के. टुमारो मॉर्निंग वी विल डिस्कस द डेली क्विज एंड द इंटरव्यू क्वेश्चन. फॉर टुडे वी विल कीप इट अप टू हियर. आज यहीं तक रखेंगे. कल सुबह मिलेंगे 6 AM and again we will discuss the concept of efficiency now because losses are covered, and I will also discuss the daily quiz and the interview question.
If V by F is not constant, तो सचिन भाई लिखवाया तो है, hysteresis loss is proportional to V square by frequency, eddy current proportional to V square, simple. वहां V square by F और V square आता है. Okay, चलिए. So thank you everyone. Good night. Take care. All the best.